द मैसेज आया, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनका कहना मानो। लड़के की माँ ने कहा, बेटा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा दवा लेके आ जाओ। अम्मा रुकिए, अभी बिजी हूं मैं। क्या कर रहे हो बेटा? वो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं कि अम्मा की बात माननी चाहिए। ये हो रहा है। द प्रेशर टू लुक गुड ऑन सोशल मीडिया। रियल लाइफ में अच्छा नहीं है। रियल लाइफ में अम्मा बगल में पानी मांग रही है, अम्मा को वेट करा रहा है, और मैसेज क्या फॉरवर्ड कर रहा है कि अम्मा की खिदमत करो। दैट इज द प्रेशर। दैट मीन्स प्रॉब्लम नंबर 5, अ स्प्लिट, अ डुअल पर्सनैलिटी क्रिएट हो रहा है। आप सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं वुमेन्स राइट की और फ्रीडम की, और औरतों को हक मिलना चाहिए, और फिर क्या कर रहे हैं? उन्हीं लड़कियों की फोटो लेकर बुली ऐप चला रहे हैं। यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। Being a female student and a Muslim female student, you must know what is bully app. It was headlines for a week. Some evil anti-social elements, they took photographs of Muslim females from social media. आपके Instagram, TikTok से आपकी फोटो ली गई, and they made an app कि this girl is for sale. They started उसका बोली लगाने लगे. Of course, those people were caught, उनको जेल हुई after a long investigation. That means the third part, privacy and safety. आपको सोशल मीडिया पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है. And those of you who are final year degree students, let me tell you, when you go for an interview, तो आपसे पूछा जाएगा your social media profile. This is happening in all HR industries. आपके इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले जो एचआर मैनेजर होगा, वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को पूरा खंगाल चुका होगा। आपका पॉलिटिकल अफिलिएशन क्या है, आप सोशल मीडिया पे किस तरह का पोस्ट करते हैं, आप वल्गर और स्लैंग यूज करते हैं, आप डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी को हर्ट करते हैं, वो पूरा आपके बारे में जान चुकेगा। एंड नाउ टू गेट सम स्पेशल टाइप ऑफ यूएसबी। It is a great pleasure for us, especially Hasanath College for Women, that today one of the greatest scholar all over India is present here. And his name is Dr. Syed Mohammed Chishti, Professor. The basic education he got from Bangalore city only, and then he did his B.Tech, M.Tech, and also 2 PhDs, and now he is the professor in Jamia Millia, New Delhi. His ambition is to guide our future generation, and he select whenever he visits any place, he used to give the lecture. But in Bangalore, he selected Hasanath College to guide the students of Hasanath College that how they have to overcome, especially that today the evil effect that what we are facing about the social media. On behalf of the Hasanath Education Society, on behalf of the management of Hasanath Education Society, on behalf of all the group of colleges of Hasanath Education Society, I wholeheartedly welcome Professor Dr. Syed Mohammed Fazlullah Chishti to this occasion. So I request Sahab to, as a token of love, welcome him through garland and with affection to Sahab. For every occasion, we must have
a leader for us to guide and to bring the people from the different places. He is none other than Muhammad Salim Sahab, who is an active member. That is Salim Akbari, who has taken a lot of effort even without the knowledge that Hasanath College students should get benefit from him. So on behalf of Hasanath Education Society, on behalf of the students present here, on behalf of my faculty, I wholeheartedly welcome to this occasion, sir. An active executive member, Janab Ishaq Said Sahab also is present here, and due to some unavailability of president is not here. So on behalf of Hasanath Education Society, on behalf of the teaching faculty, on behalf of students, and on my own behalf, I wholeheartedly welcome to you, sir. And all these efforts goes to our proactive Joint Secretary, Mohtarama Ifat Fatima Sahaba. She is doing a lot of wonderful things to the Hasanath Education Society. So on behalf of the Hasanath management, on behalf of the faculty, on behalf of myself, and on behalf of my students, I wholeheartedly welcome to this occasion, madam. I will fail in my duty if I will not welcome my faculty members and also my our Hasanath College students. I wholeheartedly welcome one and all. Thank you. Now I request Professor Dr. Syed Muhammad Fazlullah Chishti Sahab to guide our students. Especially, I think today he has selected that about the social media. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very good morning. I'm not going to tell you to be silent. And those of you who are thinking that sir is going to give a long lecture, be assured it will be short and sweet. I would like to thank the management, the trustees, the principal sahiba, staff, and the most important part, the students, for sparing your time and giving me this opportunity to speak among you. I speak and I deliver lecture regularly because I am a professor. I am presently working as assistant professor in Jamia Hamdard, New Delhi. And I teach undergraduate, postgraduate and PhD students. So after a long discussion with our representative at Bangalore, I was suggested to speak on this topic of social media, human behavior and safely. So what is the importance of this topic? I'm not going to talk about ill effects of social media because it is a necessary evil. 2 years of lockdown, the entire education was through social media, was through internet, through Google Meet, through different apps. So if I tell that we should stop using social media, it will be something which is irrelevant and practically not possible. So we would be focusing about how to use it in a way that it doesn't affect us in a negative manner. Because we cannot imagine a world without social media, especially in this post-pandemic era. So we have chosen this topic. Now, if you look at the topic, social media, human behavior, the very first question which comes to mind is, what are the factors which influence human behavior? Very first question, as a student of social science, what factors? The first is genetics, which we cannot change. We cannot choose and decide where we will be born because we are already in this world. So the genetics, the genes of our parents decide our behavior.
This is something which we cannot change. And the second factor which influences and decides our behavior is experience. Now this experience has got number of clauses. Your experience of where you live, your experience of where you get your education, experience of your surrounding and society, experience of your friends and your friend circle, experience of what you read and what you see, experience of your religion, your culture. So this second part, experience, has got a wide scope. Out of that wide scope, I will be just speaking on what we read, what we see, what we hear. That's what social media is all about. And of course, at this stage, it is very important for all of us to decide the type of friends we have. Because in a hadith recorded by Imam Bukhari in his Sahih, Prophet ﷺ said, be very cautious of the type of friend you have. Because your belief is decided, your belief is influenced by the belief of your friend. In English we say, a man is known by the book he reads and the company he keeps. So if I visit your room and I find that you have kept all Femina, film star, sports star, I will be sure that you are someone who is interested in film, movies, Bollywood. If I enter your room and I find books on Aristotle, Socrates, so I find, okay, you are someone who is interested in philosophy and history. Similarly, by looking at your friend circle, we will be able to judge what kind of thinking and mentality you have. So this second clause, experience, now is heavily influenced by social media. A study which was carried out among Indian youths, it says that on an average, a school or a college going Indian student spends on an average 2.5 hours daily on social media. So that includes Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook. Now the question to ask is it affecting us? If yes, do we realize how it is affecting us? That is the main topic. This is called controlling our mind subconsciously. I am delivering lecture to you, fine. You have come here with a thought, with a topic, such and such person is going to deliver a lecture. So I am directly influencing your mind and your thought. But there is something called subconsciously affecting your thought. I'll give you an example. I start writing an article for Hasanath College on a monthly basis, for example. And every month I write a new article, but somewhere in that article I try to show that Hasanath is not a good college, somewhere indirectly. So over the period of time, you will realize, without realizing, your thought will be that this is not a good college. It is a good college. So this is called controlling your mind subconsciously. I'll give you another example. Suppose I go to the newspaper, the agency in this area, and I find out which newspaper comes to Hasanath in the library. So they tell me X newspaper. Fine. Then I approach the editor of that newspaper. I give him a quick party, some gifts. I tell that on every week, on weekly basis, I want to publish a news showing that Muslim women are finding hijab to be oppressive. I'm just giving an example. So for next 12 months, somewhere or the other, by some hook and crook, I get news article printed and that newspaper is coming to Hasanath library. All of you are reading that newspaper. Over the period of time, you will have this notion in your head. This is called controlling our mind subconsciously without realizing that we are being affected. So what is social media is affecting our behavior. I've got to be very pragmatic. I'm not saying that it has got all negative effect. No, it has got positive effects. For example, you need a blood group.
someone in the family is having surgery and you are not getting AB negative blood group. So you put a message on social media. My relative is admitted in that hospital and I am looking for such and such blood group. Please circulate and widen this message. So you will get this. Very good. Someone has met with an accident and he or she needs some monetary donation or contribution. You start a campaign and you get a lot of funds. Your relative is staying in USA or Australia. You are able to communicate with that. So social media has got positive effects. We do not deny the positive effects. But at this age, the age in which you all are, have you ever realized that how social media is affecting your thought process? The very first thing which comes to your mind is peer pressure. What is peer pressure? Your friend is traveling from Bangalore to Udupi or Hubli and she takes a photo, selfie. I am sitting in this dhaba or this restaurant and I am enjoying idli vada, and she posts it on Facebook or Instagram or TikTok. So you get an urge. अरे बाबा next time जब मैं जाऊंगी मुझे भी इस तरह की एक सेल्फी लेकर डालना है. So this is affecting you. What your friends are doing, indirectly you are trying to imitate that. And this urge to imitate increases when that post gets thumbs up. 1000 लोगों ने लाइक किया है मेरे नए हेड स्कार्फ को या मेरे नए हूप्स रिंग को. अरे उसको 1000 लोगों ने लाइक किया है, मुझे भी अगली बार हूप रिंग लेना है तो पोस्ट करना है. Now here starts the second effect, cyberbullying. What is cyberbullying? अच्छा, ये तो मुझे पिछले बार बिरयानी लेकर आई थी तो इसने मुझे नहीं खिलाया था, मैं इसकी पोस्ट को लाइक नहीं करूंगी. Right? So your friend, her post, her picture has been liked by 1000 people. Very good, marvelous, बहुत अच्छा लग रहा है. Your post has not been liked. So this is called cyberbullying. You are actually cornering that person. Right? So peer pressure is one thing which is affecting you. Second is cyberbullying. And what is the effect? Effect is depression. अब आप अपने घर में जाएंगी, अपना लाइट ऑफ करके तन्हाई में बैठ जाएंगी, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी आपके सर पर आ गई है. What is the परेशानी? My post has not been liked by my friends. मेरे नए कपड़े को किसी ने वाहवाही नहीं की. This happens. Up medical science, doctors are working on this. There is another problem, and which unfortunately or because of genetics is more prevalent among girls. What? Disliking your own body or trying to make your body look like the body of someone else. They have a term for this. They have a medical term for this. No, body shaming is something when you make a negative comment regarding someone's body. They have a medical term for this. I'll come with that term. They say, okay, so the problem is, वो हीरोइन है, उसका ऐसा फिगर है, उसका ऐसा कलर है, स्किन का कलर है. Now you start within your mind कि मेरी बॉडी और मेरा स्किन टेक्सचर भी उसके जैसा हो जाए. That is why पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्किन वाइटनिंग क्रीम इंडिया में बिकती है. बिकॉज इंडिया में जो रेशियल डिवीजन है ये पीक पर है. And what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala does not look upon your faces on your clothes. He looks upon your heart. हुजूर की हदीस है, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को और तुम्हारे लिबास को नहीं, तुम्हारे दिलों को देखता है. क्या हुआ? अब मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यू ऑल नो एक क्रीम आती थी आज से 15 साल पहले. जो लोगों को टीवी देखते थे वो दिखाते थे एक लड़की है, उसको डार्क स्किन दिखाएंगे और वो जब जा रही है, nobody is looking at her, no boy is paying attention to her. This is all psychology. और वो then she starts using that cream, then she walks, सभी लड़के उसको देख रहे हैं. एक क्रीम आती थी.
She goes for an interview. She is dark skin, brown tan. She is not selected. Then she starts using a brightness cream, and then she is selected. ये होता था. Then there were PIL, Supreme Court तक ये मामला गया. This is very something wrong. At this stage, जिस age में आप हैं, I have of course passed. जहाँ जितनी मैडम से आपके टीचर्स हैं, we all have passed to this stage. I was also studying here. I did my BTech here, so I also passed to this stage, and then I went, and then I'm teaching. So आपके जो तजुर्बे हैं, जो experiences हैं, this is not something new. We all have faced this, but the difference is social media. 20 years back, social media boom was not something. आज तो हर बच्चे के पास मोबाइल है. So because of cyberbullying, because of peer pressure, now you come into the state of depression and loneliness. This is going to affect your health. अब आप पढ़ाई नहीं करेंगे because this is the age. जो आपके साथ हो रहा है, this is something very natural. ठीक है ना? अरे मुझे कोई attention नहीं दे रहा है. That is why you need counseling. That is why National Education Policy 2020 and other national education policies, they have given suggestion that schools must have counselors. घर में अम्मा अब्बा की लड़ाई हो रही है, हर रोज अम्मा ब्रेड और उपमा ही बनाकर दे रही है, यू आर फेड अप. अब आप बैठी रहती हैं, डेली टिफिन खोलो, उपमा एग्जांपल दे रहा हूं मैं. So schools have started recruiting, appointing counselors. तो अगर आप में से किसी के साथ ऐसा इशू होता है, माशाल्लाह, you have got very very experienced and a trust and अभी सर से बात हो रही थी, he has got a lot of wide reach in the society, उनकी social responsibility है. आप अपने मैडम के सामने, प्रिंसिपल के सामने आइए. How to overcome this depression? By talking, by sharing your feelings and thought. क्योंकि आपके पास उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरे पोस्ट को किसी ने लाइक नहीं किया है. सो आपके थॉट को इस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है. फोर्थ पॉइंट आप सबने सुना होगा, सोशल इन्फ्लुएंसर्स. हैव यू हर्ड अबाउट इट? Who are social influencers? People who are paid. People who are paid by the companies and political parties to shape your thought. And what happened? I don't know the name of this Bollywood actress, some Gupta. Isha Gupta. Yes, Isha Gupta. Right? Some of you must be aware of it. She signed a bond, an agreement with the company for brightening the skin. She is tan skin, she is brown colored. So later she realized that this is not something good. So she said, no, I'm not going to promote your product. So they have filed a sue against her that she is breaking the contract. जब आपके सामने यह प्रॉब्लम आ जाए और आपके लाइफ में ये सोशल इन्फ्लुएंसर्स आ जाए, समझ लीजिए आपकी अपनी थॉट प्रोसेस अब नहीं जा रही. योर एनालिटिकल स्किल इज नॉट डेवलपिंग. सो एनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट, बोथ. सो एनी स्टूडेंट, यू टेल मी वेरी क्विकली, व्हाट इज CALLD, कैलेट और सैलेड? Someone very fast. Called, right? But if you because you took time, this is called thinking outside the box. CALL is not calendar or salad, it is called. But social media influencers, they are trying to control what you think. How will they control? I'll give you an example. I launch a product, mobile, some company, some big personality, movie star or some cricketer star who's got wide following, fan following, he will promote this very good brand, reliable. You like that personality, you are his or her fan. So he is now influencing your thought without checking what is the performance of this mobile, what its RAM or GB capacity, pixels, camera. You are not totally dependent on that post. So as long as it is related to a post, fine. खरीदो 15-20 हजार का मोबाइल अच्छा नहीं था, 3 साल बाद नया ले लेंगे.
But if someone is influencing your thought on social, moral, and religious issue, it becomes a problem for the society. Because social functions and social thoughts are not developed overnight. I'll give you an example for this. Female feticide, right? Killing babies in the fetus of mother before she is born is very high in India. In fact, it is the highest in India across the globe. So government made a law and it was passed in 1950 that whoever does this, he or she will be punishable. But we know for sure that still this evil practice is going on in the society. In spite of 70 years of law against this. Because any social change, it takes time to show the result. So if you start developing a social or a moral or an ethical thought which is not as per the religion or the good norms of the society, you become a problem. Have you heard about the massacre in Myanmar? Facebook has accepted it, you can Google it. Facebook has accepted that Facebook played a very negative role in inciting violence against Muslims in Myanmar. Similarly, those of you who are students of social science, if you have heard about or studied about Arab Spring, right? It was a revolution which started in Tunisia. Social media played a very, very pivotal role in propagating this Arab Spring from Tunisia to all the Arab countries. So when these social media influencers, they try to control your religious, your political thought, then that effect will not last only for 3 years, the age of the mobile handset. It's going to infect your thought throughout your life. मैं लेकर आता हूं, for example, and the research says you blindly believe a data. I carried out a survey, right? And I found out that 90% of the Muslim girls like this or do not like this, anything. The first question which comes to your mind, which should be, what was the sample size? Where was this data interview carried out? If it was only in a one particular college in a city, if you have studied statistics and sampling, any student can say this data is invalid. Because for a sampling, for a data to be relevant, it should cover a very large section of the society. So I have to carry out that particular survey or interviews not only in Bangalore, but also in Mysore, in Delhi, in Trivandrum, in Jaipur, in Manipur, etc. Then it will represent our data. So what is happening on social media, data and statistics which are not authentic, which cannot be called a representative data or sample, those data are being presented as if they are portraying a section of the society. ये हो रहा है. And मैं आप ही जैसे बच्चों के बीच में रहता हूँ, पढ़ाता हूँ सुबह 9 से 4:30 बजे तक. A girl came to me. सर, अगर हम भी करवा चौथ का व्रत रखें, what is harm? Genuine question था उसका. I cannot deny it. We fast in the month of Ramadan. So if we also fast for Karwa Chauth, what is wrong in it? Now as a teacher, I cannot scold her. अरे तुम्हारे दिमाग में सवाल कैसे आ गया? What is happening? तुमने उसको बैठाया. मैंने कहा अच्छा ये आपके दिमाग में थॉट कैसे आया? I have to go into the root. इस तरह वो कल सोशल मीडिया फेसबुक पर किसी ने डाला था. मैंने कहा किसने डाला था? You know that person? नहीं सर. How do you know जिसने डाला था उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है? नहीं सर, इससे भाईचारा बढ़ता है. फाइन, we do not deny it. भाई हम तो सबसे ज्यादा भाईचारा के प्रमोटर हैं, लेकिन जो गंगा जमुना तहजीब की बात होती है, that तहजीब is तब relevant when you maintain your identity. If a non-Muslim comes to my house, मेरा अच्छा दोस्त है, बोलता है भाई I am pure vegetarian. As a Muslim, my responsibility is to serve him pure vegetarian, right? मैं बोलूंगा नहीं भाई, अगर आपको मुझसे फ्रेंडशिप मेंटेन करनी है
you will have to eat murga biryani. That means I am trying to infringe in his religious freedom and right. इस स्टेज में आपको अपने थॉट्स को वेव नहीं होने देना है. I'll give you a very interesting example, and this experiment was never carried out. It's a hypothetical case. बहुत ही interesting है. You take 5 monkeys, put it in a cage. 5 बंदर लीजिए, एक पिंजरे में डाल दीजिए, एक पोल के ऊपर 2 केले, एक केला रख दीजिए, बनाना रख दीजिए. अब मंकी, जैसे ही कोई मंकी उस पर चढ़ने जाए, एक बाकी 4 मंकी पर आप पानी स्प्रे कीजिए. जो चढ़ रहा है उस पर नहीं, जो बाकी 4 है उन पर आप पानी स्प्रे कीजिए. ओवर द पीरियड क्या होगा, वो 4 मंकी अब किसी भी मंकी को ऊपर नहीं चढ़ने देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जब भी कोई मंकी ऊपर चढ़ता है बनाना लेने के लिए, हमारे ऊपर क्या स्प्रे होता है, पानी. ठीक है. उसके बाद क्या कीजिए, उस 5 मंकी में से एक मंकी को निकाल दीजिए. यू ब्रिंग ए न्यू मंकी इन द केज. What will new monkey do? Try to climb up the pole to get the banana. Again, आप पानी डालेंगे, तो अब मंकी किसी को चढ़ने देंगे. अब 5 मंकी है, एक उसमें नया है. अब उन 4 में से एक मंकी को फिर निकाल दीजिए और एक नया मंकी लेकर आइए. अब आपके पास केज में 2 नए मंकी हैं और 3 पुराने हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, ऐसे करते जाएंगे. एक ऐसा केस आएगा जब आपके पास 5 के 5 न्यू मंकी जो है वो केज में होंगे. उनमें से किसी को नहीं मालूम होगा कि हम जब ऊपर चढ़ते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, बट ईच ऑफ देम विल स्टॉप टू द अदर मंकी टू क्लाइंब अप. ये होगा विदाउट नोइंग व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस. दैट इज हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया. अरे उसने किया है तो सही होगा, एंड दैट अर्ज टू फॉरवर्ड द मैसेज. मैसेज आया, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनका कहना मानो. लड़के की माँ ने कहा, बेटा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा दवा लेके आ जाओ. अम्मा रुकिए, अभी बिजी हूं मैं. क्या कर रहे हो बेटा? वो मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूं कि अम्मा की बात माननी चाहिए. ये हो रहा है. द प्रेशर टू लुक गुड ऑन सोशल मीडिया. रियल लाइफ में अच्छा नहीं है. रियल लाइफ में अम्मा बगल में पानी मांग रही है, अम्मा को वेट करा रहा है, और मैसेज क्या फॉरवर्ड कर रहा है कि अम्मा की खिदमत करो. दैट इज द प्रेशर. दैट मींस प्रॉब्लम नंबर 5, अ स्प्लिट, अ डुअल पर्सनैलिटी क्रिएट हो रहा है. आप सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं वुमेन्स राइट की और फ्रीडम की, और औरतों को हक मिलना चाहिए, और फिर क्या कर रहे हैं, उन्हीं लड़कियों की फोटो लेकर बुली ऐप चला रहे हैं. यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. Being a female student and a Muslim female student, you must know what is bully app. It was headlines for a week. Some evil anti-social elements, they took photographs of Muslim females from social media. आपके Instagram, TikTok से आपकी फोटो ली गई, and they made an app कि this girl is for sale. They started उसका बोली लगाने लगे. Of course, those people were caught, उनको जेल हुई after a long investigation. That means the third part, privacy and safety. आपको सोशल मीडिया पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है. And those of you who are final year degree students, let me tell you, when you go for an interview, तो आपसे पूछा जाएगा your social media profile. This is happening in all HR industries. आपके इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले जो एचआर मैनेजर होगा, वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को पूरा खंगाल चुका होगा. आपका पॉलिटिकल अफिलिएशन क्या है, आप सोशल मीडिया पे किस तरह का पोस्ट करते हैं, आप वल्गर और स्लैंग यूज करते हैं, आप डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी को हर्ट करते हैं, वो पूरा आपके बारे में जान चुकेगा. एंड नाउ टू गेट सम स्पेशल टाइप ऑफ यूएस वीजा, इट इज अ रिक्वायरमेंट दैट यू रिवील योर सोशल आइडेंटिटी. तो आप मेरे सामने आकर बोलिए, मैं तो बहुत ही अच्छी हूं, मैं जानवरों का बहुत केयर करती हूं, अम्मा पापा की बात मानती हूं, और पूरा टाइमलाइन में पता लग रहा है कि आप जानवरों को किल कर, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और कभी माँ बाप के रेस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रही है. सो व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट योर पोस्ट आर नॉट कोइंसाइडिंग. सो दैट विल शो दैट यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम. इसलिए आप खासकर बच्चियों को, you have to be very very cautious of what you share on social media. मुझे पता है अंदर से अर्ज होता है, नया स्कार्फ लिया है, नया कपड़ा लिया है, दिखाना है. You have to control this temptation, because
this temptation is going to lead you to some big trouble. I will tell you an incident which was in police records. A family was about to travel from a city to other city. So उस लड़की ने पूरा सोशल मीडिया में डाल दिया, on this particular day we are traveling, we are going to travel from this to this. तो भाई सोशल मीडिया पे चोर उचक्के गुंडे बदमाश भी होते हैं. They found out अच्छा ये पूरी 2 महीने के लिए 1 महीने के लिए पूरी फैमिली जो है वो जा रही है वर्कली, रात में चोरी करके चले गए. It's not something to just to create fear. I'm telling you a real incident. Similarly, आपका mobile phone is linked to your social media profile. So if you're using internet banking, if you're using all those facilities, Flipkart, ATM, वगैरह, the same phone number is also linked to your those bank accounts. So hacking is very, very easy. So of course you are students now, you cannot afford 2 mobile phones. I always suggest to my friends, my colleagues, that try to have 2 phone numbers at least. One phone number you should not reveal it to anybody. That should be only for receiving bank ATMs, PIN, etc. And the other is for everyone. Similarly, your one email address only will be for bank and other purposes, and one for all those things. So you have to be very smart. When you are using social media, just don't start following TikTok or here, wo nahi. People are there. They are using, pata hai, how do I like you? Have you heard about data capturing, AI, artificial intelligence? When you install apps on your mobile phone, you always tick, I agree to terms and conditions, and then only that particular app is downloaded. Am I correct? Yes. But nobody bothers to read those terms and conditions. 99.9999% never read that. Right? So one of the clauses in that terms and condition is that you authorize that particular app to capture your conversation. So even when we are talking right now, हम सबका mobile phone on है, Amazon is capturing the words which I am speaking. जब मैं अपने घर में जाऊंगा, suppose इस पूरे 40 minutes की गुफ्तगू में I have used a particular term shopping, just for example. Or for example, I have used the term Twitter. So the moment I log into my Twitter or Facebook account, I will get a data and advertisement related to what I have spoken. You can try this. For example, मैं बोलता हूँ, मैंने 10 लोगों को मैसेज किया, I need a carpenter. उससे भी easy example दे रहा हूँ. The moment you will log on to your Facebook or your Flipkart, your Facebook or your Twitter account, you will get an ad showing the carpenters in your area. That is called artificial intelligence and data capturing. So you might be getting this end-to-end encryption. All of those who are students from computer science, you know, when you install WhatsApp, you get end-to-end safety. There is nothing like that. There is nothing like that. Trust me, you all must have heard about Pegasus. कोई चीज ऐसी नहीं है, secure नहीं है. If you are keeping yourself up to date, just 2 or 3 weeks back, there was a big scandal called Twitter Files. Twitter Files, just you can read it about it. FBI and CIA, they have agreed that we are monitoring the social media, and when we find a particular post which is not as per our policy, we try to minimize the reach of that post, or we try to get that post deleted. So be very sure that whichever app says no, it's nothing is safe. आप कुछ भी post करती हैं, if you are tracked, if you are monitored. Now you might come with a question. भाई जब हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो हमको डरना कैसा? Fine. लेकिन there is something called privacy. मैं बिरयानी खा रहा हूँ. I don't want you to know कि मैं बिरयानी खाता हूँ. Although कि बिरयानी खाना कोई गलत चीज नहीं है. Because I know you can misuse this information. How will you misuse this? जब मेरी गाड़ी जाएगी मेरे को बार बार आप ऐड देंगे, यहाँ बिरयानी बिक रही है, यहाँ बिरयानी बिक रही है. You will create a temptation. तो आजकल आपने सुना होगा, data is the latest oil. Have you heard this term? Yes. पहले जो revolution आया वो oil से आया, गैस से आया. Now I need data. आप कौन सी बुक पढ़ती हैं, आप कौन से डॉक्टर के पास जा रही है, आपने कौन से पोस्ट को लाइक किया है, आपने कौन से खाने को थम्स अप किया है, आपने कौन सी मूवी को किया है. I need this. Why? Because I am running a e-commerce industry. मुझे फ्लिपकार्ट और अमेजन और ये जोमेटो वगैरह से मैंने पैसे लिए हैं
कि मैं आपको पूरा डेटा लाकर दूंगा कि अल हसनात की लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, कुरकुरे अच्छा लगता है कि दूसरा चिप्स का ब्रांड अच्छा लगता है, तो मैंने उनको दे दिया, दे विल स्टार्ट सेंडिंग एड्स टू योर फोन. So you have to be very cautious. You have to start thinking analytically. जो चीज आपको दिखाई जा रही है भाई नहीं. Just last 5 minutes and then we will open up for question and answer inshallah. I'll give you something very very relevant to history. History के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, right? महाराणा प्रताप. You all must have heard about it. Right? There was a movie on his name. Yes. Right? पिक्चर बनी थी. उसमें दिखाया गया है कि he had one wife. कितनी बीवी दिखाई गई है? One. If you read book, you will find out he had 11 wives. Historically proven. Book download करके पढ़ लीजिए. लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? हमने सोशल मीडिया को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज समझ लिया है. Why? Because of the ease and the quickness. अगर आपको मेरी इस बात को क्रॉस चेक करना है, you'll have to go into the library. अपना कार्ड निकाल के देना पड़ेगा. लाइब्रेरियन सर लेंगे, चेक करेंगे, बुक निकालेंगे, आपको 250 पेज की बुक पढ़नी पड़ेगी. गूगल में तो किया, आपको मिल गया. Now I can influence this. If हमारे सलीम अकाबानी साहब into software, he can tell you that Google searches can be influenced. अगर मैं गूगल करूंगा best biryani in Bangalore, which results which will be displayed on page 1 can be manipulated. I need an Android phone. मैंने टाइप किया Android phone with 4 GB RAM. एग्जाम्पल दे रहा हूं. Now page 1, page 2 Google result में आना है. So which results will be displayed on page 1 can be manipulated. तो अब मैं चाहता हूं कि you all should never know what really happened in history. So मैंने पूरा Google के साथ करके अपनी IT टीम बैठा दिया है. 4,000-5,000 लोगों को बैठा दिया है मैंने, और उनको मैं मंथली सैलरी दे रहा हूं कि बाबा whenever someone types this you should reflect this result. हो क्या रहा है? बच्चों का मुताला किताबों से दूर हो रहा है. Because of the ease and the quickness. So you look for a hadith, you will not go to Sahih Bukhari. Oh, I need book hadith on digital app. You never know whether the translation is correct or not. You would have never read the Arabic Sahih al-Bukhari, but you know, I follow only Sahih al-Bukhari. Arey Baba, you have never read Sahih al-Bukhari. Tell that I follow the English translation of Sahih al-Bukhari, translation by someone who I have never read, whom I have never met, whose academic credibility I don't know, but just because it is on Google, I follow it. Isn't that happening? So ये एक academic loss हो रहा है. Second loss ये हो रहा है, बच्चों की concentration और memory कमजोर हो रही है. This I can tell being a teacher in a university. हम जब किताब पढ़ते हैं, हम किताब में नोट्स लिखते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं, और हमको याद होता है कि हमने इस किताब में ये पढ़ा था. आप जब कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको मिल तो जाता है, वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन उसका मेमोरी में जो रिटेंशन टाइम है वो बहुत ही कम होता है. एक हफ्ते बाद वो इवोपरेट हो जाएगा. तो आप में से जो लोग चाहते हैं कि आपकी मेमोरी शार्प हो, प्लीज, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स. मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पढ़ता हूँ. मैं हफ्ते हफ्ते में किताबें खत्म करता हूँ. And I read variety of things. मैं बॉलीवुड की कहानी से लेकर तफसीर, हदीस, सब कुछ पढ़ता हूँ. आपको किताबों से दोस्ती करनी है. सोशल मीडिया का सबसे बड़ा एक स्टूडेंट्स के लिए ड्रॉबैक ये हुआ है, लोगों की रिसर्च तो आसान हो गई है, क्योंकि यू गेट. एक साहब ने पीएचडी में कहा, आई एम थैंकफुल आल्सो टू एमएस वर्ड एंड गूगल फॉर गिविंग मी द रिजल्ट एंड एमएस वर्ड फॉर कॉपी एंड पेस्ट. तो आपका तो क्या हो रहा है, जो रिजल्ट आए हैं वही हो रहा है. नेवर डू दिस. बीइंग अ डॉक्टर आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ. एक और चीज बता दूं, इसका इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट, स्पॉन्डिलाइटिस. मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके नेक में गैप हो गया है, जिनके प्रॉब्लम हो रही है, उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स. बच्चे आ रहे हैं जिनको 8 साल की उम्र में सोडा ग्लास लग गया. बिकॉज हम जब बच्चे थे, व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, आई वाज गिवन द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर अवार्ड ऑफ साउथ इंडिया. ठीक है, वी यूज्ड टू प्ले. शाम को असर पढ़कर जाना,
और मगरिब से पहले आ रहा। वालिद मेरे एयरफोर्स में थे, तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल था हमारे घर में। शाम को खेलने जाना, वो जैसे पढ़ना कंपल्सरी था वैसे खेलना भी कंपल्सरी था। आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया फिजिकल एक्टिविटी हैज डिक्रीज्ड। These are all long. तो आपको बच्चे मिल रहे हैं 8 साल 9 साल के, हॉर्मोनल इफेक्ट्स और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। मैंने अभी सलीम साहब से बात की, इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में हम करेंगे। थिंग्स विच आर टोटली अनएथिकल इज बीइंग प्रमोटेड। लड़की के, बिकॉज यू ऑल आर ग्रोन अप, देयर इज नथिंग टू शाई। लड़की से लड़की की शादी को बताया जा रहा है, इट इज अ नॉर्मल थिंग बाबा, इट इज हैपनिंग इन यूके। मर्दों की मर्द से शादी, इट इज नॉर्मल थिंग। Have you heard about common gender? नीदरलैंड में एक लॉ आ गया है कि 9 साल का लड़का बोलेगा कि although I am born as a लड़का, but my psychology is that of a लड़की, so my gender should be लड़की. It has become a law, and these things are being portrayed as something which is normal. और चूंकि आपकी अपनी कल्चरल वैल्यूज बहुत कमजोर है, you start imitating them. आपको लगता है कि हम इस्लामिक कल्चर को फॉलो करेंगे तो हम पिछड़े हो जाएंगे। No. You all have to come out of this inferiority complex. Start reading. Start reading. अभी आपने पढ़ा होगा इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट, पढ़ा? Very good. She is from a small town, मिर्जापुर, यूपी। came also from UP. People can अल हसनात कॉलेज का जुमा का खिताब था मेरा खुदूसा मस्जिद में, मैंने नहीं बताया। मैंने कहा बेंगलोर शहर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी एजुकेशन यहीं पे हुई है, मोहब्बत है मुझे इस शहर से। मैंने कहा यहाँ के जो पुराने लोग थे, सर के जनरेशन के लोग थे, दे वर फार साइटेड। इदारा बनाया, गार्डन्स बनाए, इंस्टीट्यूट्स बनाए, बगल में आपके मुस्लिम ऑर्फनेज है, मुस्लिम एनजीओज बनाए, विदाउट टेकिंग एनी पॉलिटिकल नेम। नो यू नो, आज के दौर में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? आपको ये जो इदारा मिला है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि आप यहाँ कंफर्ट के साथ, हिजाब के साथ बैठकर बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अगर आप अपने टाइम को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में कर रही हैं, यू आर स्पॉइलिंग योर ओन फ्यूचर। बेस्ट फैसिलिटी है, दिस इज द एज टू लर्न। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करूंगा। इस एज में एक दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्शन होना इज ए नेचुरल थिंग, लेकिन अल्लाह ताला और शरीयत ने उसको कंट्रोल करने का भी तरीका बताया है। यू कीप योर माइंड बिजी इन एकेडमिक्स, इन सम कंस्ट्रक्टिव बुक। अपना एम्बिशन बनाए। क्यों नहीं आप में से बहुत सी बच्चियां IAS, UPSC और लॉयर्स और डॉक्टर्स क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं आप में से आगे चल के कोई अपना बुटीक चालू कर सकता है, कोई अपना बिजनेस चालू कर सकता है? तो एम हाई। अल्लाह ताला ने जो आपकी किस्मतों में रखा है वो मिल के रहेगा। हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त से पहले चीजों को हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। आप सब बच्चियां हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, दुनिया में बहुत बुराई बढ़ रही है। हम एज ए टीचर्स, एज ए बड़ा आपको बता ही सकते हैं। आपके पेरेंट्स ने जब आपको अल हसनात में एडमिशन कराया तो उनका ट्रस्ट था ना अल हसनात पे कि दिस इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर आवर चाइल्ड इज गोइंग टू गेट एजुकेशन प्लस अपब्रिंगिंग, तालीम के साथ तरबियत मिलेगी, एक सेफ्टी का माहौल है। तो अपने टीचर्स के उन विश्वास को तोड़िए मत। और वन थिंग, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। अगर आप अपने वक्त का सही यूज नहीं कर रही, मैं एक हदीस शरीफ बताकर अपनी बात खत्म करूंगा, तो यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योर ओन सेल्फ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, there are two blessings of Allah subhanahu wa ta'ala which most people do not make use of. अल्लाह ताला की दो ऐसी नेमतें हैं जिसका अक्सर लोग सही हक अदा नहीं करते। पहला फरमाया खाली वक्त, फ्री टाइम, और दूसरा फरमाया अच्छी सेहत। क्योंकि ये जो खाली वक्त है, ये अल हसनात की एक स्टूडेंट को, और अमेरिका में एक जो लड़की पढ़ रही है, जो IIT में पढ़ रही है, जो इंग्लैंड में पढ़ रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन की, कैस्ट की, कंट्री की हो, एक चीज सबको बराबर है। व्हाट इज दैट? टाइम। आपको भी 24 आवर्स है, मुझे भी 24 आवर्स है, राइट? सबको बराबर है। हाउ यू यूटिलाइज दिस 24 आवर्स? in studying, preparing for your future, or TikTok shopping, liking, no use. 5 years down the line आपको यार मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया।
So instead of repenting, you make full use of student life, make the best use of the resources provided by Hasanath. Stay in touch with your teachers. If you have got any mental problem, talk to your teachers. They are your best friends. They will consult you, and all the best wishes. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah. Thanks so much, sir. And I thanks all the management and staff for giving the Falah Research Foundation. We have Falah Education Society as well to deliver this lecture. Now we are open to question and answer session. I know you have a lot of questions in your minds and few people will hesitate to come out and ask. But I will encourage you to we have Sayyid Sahab here, we have Professor Sayyid Fazlullah Chishti Sahab. We will not have him occasionally. He is a very busy person and will not get him alternate day. So I'll encourage you, I'll motivate you to ask questions, whatever you want to ask about the topic, of the topic, about the deen, about the dunya, about your career, about anything you want to ask, you can ask. I'm open to question and answer session. We have cordless mic, I can bring the mic, and if you not want to speak up, you can write a question and ask. We are open to question and answer. Anybody? Anything, career guidance, your health issues, your whatever you want to ask. You want to ask how to go about social media. Sir said, I have a question, sir. You said 2 IDs, you should maintain 2 numbers. Can you just guide how to manage those 2 numbers? If I have only one phone and I'm using 2 numbers, how to manage that? This suggestion, as I said, is for those who are working. You cannot ask your parents, Baba, you have to maintain 2 numbers. So you know, as long as you're a student, 1 number is enough. But if you are a working professional earning, it is my suggestion that you need to have 2 numbers. How to maintain? 1 number will be linked to your bank account, your passport seva kendra, your gas service agencies, etc. That will not be shared to anyone outside your family. When you go to office for interview, हर फॉर्म में share your phone number. अब फोन में होता क्या है? हम लोग कैंपस इंटरव्यू कराते हैं, वॉक इन इंटरव्यू, 1000 बच्चों ने आके अपना मोबाइल फोन और ईमेल एड्रेस लिख दिया. When we know how can we use that information, we know that. तो आप अगर एक ही हैंडसेट में 2 लिख रहे हैं, तो 1 is for your only for these government and ATM purposes, other is for that. It's very easy to maintain. That was just a complimentary question for me. Anybody, any question from you? Otherwise, we can conclude and we can leave. So, I just want to tell the students, they tell that we need the phone all the time. But in a human brain cannot do more than one thing at a time. They want to read also and they want to have the phone also. The main complaint of the parents is, the students come, the daughters tell us, we want the phone full time. So how can you have 2 things doing at the same time? It's impossible. So just advise them how to keep the phone away when they are studying. Keep the study time only for studies and not touching the phone. Thank you, ma'am. So this has been accepted as in the medical field, and we have in AIMS, Delhi, we have got a social media de-addiction center. So medical fraternity has accepted that this is a disease, it's a psychological disorder in which you get an urge to stay. Even if you are khana bhi kha rahe ho, to phone rehna chahiye. So first thing we have to accept, this is not something normal. It is a disease state. It has got problem with your psychology. This is the first thing. Now, what is the solution? There are 2 ways. First thing, जब किसी को शराब की लत लग जाती है या किसी को बीड़ी की गुटखे की लत लग जाती है, what do you do it? एक stop कर देंगे, you get withdrawal symptoms. पागल हो जाएगा, इरिटेट करेगा, वो लड़ाई करेगा, या एक दूसरे का बाल खींच के लड़ाई करेंगे लड़कियां लोग. First thing is counseling of that student or rather patient. Counseling is must. Second, उसको meditation सिखाना पड़ेगा, breathing exercise सिखाना पड़ेगा, उसको meditation करके बताना पड़ेगा, अपने दिमाग को कंट्रोल रखो. तीसरा,
ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा और ऐसे कुछ पेशेंट्स को बुलाना पड़ेगा जो आकर लाइव टेस्टिमनी दें कि बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ दिस फोन आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस। आंख की रोशनी चली गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ब्रेन ट्यूमर या जो भी है। चौथा, उस स्टूडेंट को बताना पड़ेगा बाबा दिस इज अ डिजीज स्टेट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। तो ये एक जब डिजीज हो जाती है तो होता क्या है, जो जहर होता है वो एक बूंद, एक ड्रॉप भी बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट दिखा देता है, और उस एक ड्रॉप के असर को दूर करने के लिए टेक्स bottles and bottles of medicine over 3 to 4 months. उसी तरह if a student is addicted to social media or mobile phone, we need to adopt all these approaches: counseling, meditation, talking to the student, talking to the parents of the student. These are the things which you have to adopt. पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो बच्चे को आपके सुपुर्द कर दिया है, अब आप ही इनको बताइए। मुझे मालूम है, I also face the same thing. सर आपके पास हम क्यों भेजते हैं फिर? अरे बाबा, you people stay with her, क्या होगा? For 4 hours, 5 hours? आप लोग तो बड़े हो गए, हम कुछ बोलेंगे तो जवाब भी दे देते हैं लोग। कैसे होता है? छोटे बच्चे, 8th क्लास के बच्चे जवाब दे रहे हैं। इसलिए देखिए, आप लोग अपने आप को सबसे पहले बताऊं, बच्चा समझना बंद कीजिए। At 16 and 18, people, I don't want to name them, they won over the territories of the world. Have you heard about Andalus, Spain? Heard about Gibraltar? Jabal al-Tariq, a Muslim soldier who was just in his youth, he won over that area. तो आप लोग अपने आप को मैच्योर समझना शुरू कर दीजिए। मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ, अरे इसकी उम्र ही क्या, 18 साल 19 साल। अरे भाई, 18 साल 19 साल नहीं, इस्लाम ने 12 साल में आपको अडल्ट मान लिया है। तो फील दैट। अपनी आंखें खराब मत कीजिए, अपनी मेमोरी खराब मत कीजिए, क्योंकि एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। यहाँ जितने लोग बैठे, सबकी एक दिन शादी होगी, सब एक दिन माँ बनेगी। अच्छी बात, अल्लाह करे सब खुश रहे। आपकी अपनी फाउंडेशन, नॉलेज, हेल्थ कम होगी तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे पाएंगे? तो फ्यूचर के बारे में भी उनको बताना पड़ेगा। Anybody, any question, girls? Come on, sir. I just want to encourage you all to not shy away from asking questions. It's never a right or a wrong question. In anything which is a small point coming to your mind, just speak. Maybe there are hundreds others who are not having the courage to stand and ask the question. You might be the one. You might actually be leading by example. So don't hesitate. This is a very safe environment. And I want to request all the teachers and principal madam also to just like close your eyes, shut your ears, and let them ask questions. We are not registering this. This is not being recorded. There is no negative point. Okay, so just ask a question because you have such a great opportunity to interact with intellectuals. And whatever Dr. Sahab has said, it was one way. This is an opportunity to make it interactive. So speak up. This way you develop yourselves. Don't hesitate. At least I want 2 questions. Not more than, yeah, wonderful. Close. It's working. I have one question. It is out of the topic. What is OCD problem and how we can overcome the problem? What is it? OCD. Okay. Obsessive compulsive disorder. Okay, बैठ जाइए. This question is related to my medical profession. Okay. See, वसवसे की शिकायत होती है. When you are too much obsessed about a thing. For example, how it starts. मैं starting से बताता हूँ. इसकी starting 99% cases में होती है when you go for ablution, वुजू करने जाएंगी. When you go for shower, आपको लगेगा मैं अभी तक साफ नहीं हुई हूँ. You will use tons and tons of water. आप जब नमाज करने के लिए जाएंगे, आपको लगेगा मेरा वुजू नहीं हुआ है. जब आप पंखे को स्विच ऑफ करके सो जाएंगी, नहीं वो बटन स्विच ऑफ नहीं हुआ, you will again go. रात को दरवाजा लॉक करने जाएंगी तो क्या होगा? It's a psychological disorder. First thing. Second, it has to be attended in the very first stage. ये जितना लंबा हो जाएगा उतनी प्रॉब्लम होगी. इसका इलाज क्या है कि आपको जब और जाए अंदर से तो अपने साथ साइकोलॉजिकली नहीं, मैं नहीं करूंगी,
मैंने वजू किया, नहीं मेरा वजू हो गया है। जब आप 3-4 बार ऐसे करेंगी आपको लगेगा नहीं मेरा वजू नहीं हुआ, मेरे एल्बो जो है सूखा रह गया है, आप वजू करके आएंगे। आई गॉट पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम रीजन इसमें ज्यादातर पेशेंट गर्ल्स फीमेल्स होती है ओसीडी में। तो इसकी प्रॉब्लम के लिए आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मेडिकेशन की जरूरत है। आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, गूगल पे जाकर डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर साइकोलॉजिकल ड्रग्स का बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, बॉडी को भी मतलब मोटापा होने लगता है। सेल्फ मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। अप्रोच अ डॉक्टर फर्स्ट। सेकंड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। थर्ड, लिव अ हेल्दी लाइफ। और वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसी अंदर से वो ऑब्सेशन आए कि नहीं मैंने लॉक नहीं किया है, नहीं मैंने किया है, डोंट रिपीट दैट थिंग। मेरा वजू नहीं हुआ है, नहीं हो गया है, परफॉर्म द सलाह। जब आप इसको करेंगे तो यू आर एक्चुअली सप्रेसिंग दैट अर्ज इन द बट। बट इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम दिस, दैट पर्सन नीड्स अ मेडिकल असिस्टेंस। I would like to show you that. 2016 there was a lecture of Sahab. The topic was very relative: effects of internet and social media on cognitive and social skills. So that could be like we had a lecture in 2016. Maybe your senior, super senior, super duper seniors listen to. I've been a regular visitor. The trustees have been kind enough, and Salim Akabani Sahab has been kind enough to give me this opportunity. I've been visiting Al Hasanath since last 6 to 7 years. So you people will study and you will go away, and then next year will come. So whenever you go out, whatever good things, thoughts you are getting from your teachers, from these kind of lectures, try to dissipate it in the society. Because you all are enough fortunate enough to come and attend the lecture. बहुत सी बच्चियां लड़कियां होंगी, those who couldn't come to Al Hasanath. So आपको ये अच्छी बातें उनको भी बतानी. Any questions more? I'll come. The name of that disorder is body dysmorphia. Dysmorphia. We have a question, sir. How to make my parents understand I want to study, don't want to marry too early? See, I would request Principal Sahiba and the trustees to organize a interactive session with the parents. We are doing this. They're in a small school. So parents को बनाना पड़ेगा. Keep silence. We are doing this. I'll tell you, we are doing this in Kanpur, and what is happening, I'll tell you क्या होता है. जिनके घर में लड़कियां हैं, they should be trained, they should be educated how to take care of girls. अल्लाह ताला ने लड़के लड़की अलग अलग जेंडर बनाया है ना, दोनों को परवरिश का अलग अलग तरीका होता है. अब ड्यू टू सम रीजन, फाइनेंशियल, सोशल, पेरेंट्स को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई. फॉर एग्जाम्पल, अब उनके घर में बच्ची है, अब उनको मालूम ही नहीं है कि हमारी बच्ची को किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है. इसलिए हमने अपने कानपुर सेंटर में, बेल्लारी सेंटर में पेरेंट्स के काउंसलिंग सेशंस किए. तो अगर आप में से किसी के पेरेंट्स आपकी शादी के लिए जल्दी बोल रहे हैं, एक चीज याद रखिए कि पेरेंट्स हमेशा आपके वेल विशर होते हैं. लेकिन आपको फिर भी लगता है तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए, वी विल हैव अ सेशन विद योर पेरेंट्स, हम बताएंगे. और एक और बात बता दूं, शादी डजंट मीन कि आप अपनी एजुकेशन को आगे प्रोसीड नहीं, कंटिन्यू नहीं कर सकती. देयर इज समथिंग कॉल्ड NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. There is something called IGNOU, IGNOU, Indira Gandhi National Open University, and there are a lot of correspondence courses. That doesn't mean कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 18 साल होते, अब तो 21 साल हो गया है ना, अब तो 21 साल हो गया है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी शादी हो फॉर्मली, मैं बस बता रहा हूँ कि आपकी शादी जब भी हो, 21 में हो, 22 में हो, 25 में हो, शादी doesn't mean end to your education. अरे ये भी बड़ी अच्छी बात है. मैंने एक इंटरव्यू में कहा हैदराबाद में, तो मीडिया वालों ने दिखाया नहीं. वो मुझसे चैनल वाले आए कि आप जो गवर्नमेंट का नया लॉ आया है कि शादी के लिए लड़की की उम्र 21 इयर्स होनी चाहिए, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? मैंने एक ही स्टेटमेंट बोला, बट दे नेवर शोड इट. I have just one question. As per law, an 18-year-old girl can live with a boy in a hotel without marriage in a living relationship. पता है? कितने साल की? 18 years. So to start living illegally from religious point of view, you should be only 18. But to legally marry, you need 21. ये कैसा कानून है साहब? This is called. मीडिया तो आपको सिर्फ ये दिखाएगी. नहीं, मेरा क्वेश्चन जेन्युइन है कि नहीं है? Irrespective आप किसी रिलीजन
रिलीजन के हैं, कैस्ट के, दैट इज इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन. दिस इज अ मोरल क्वेश्चन. टू हैव अ लिविंग रिलेशनशिप, गर्ल 18 साल की होगी, वोट देने के लिए 18 साल, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 साल, शादी करने के लिए 20 साल. तो आपको सोचना है, हर बात पे सोचना है और देखना है कि हमारी मजहब में क्या कहा गया है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Any more questions? We'll end this, inshallah. Okay. So. Okay, we'll have last question. Sir, want to go? If you want to ask more, Because I've got I another can ask function. you. I would have Sorry. stayed with you, but I've got a function in So RT there Nagar. People are are two waiting. questions I'll quickly read. How to pray salah with concentration and on time? How did you achieve 3-4 professions in a short period of time? I don't want to miss that. First question is very important. How to have khushu and khuzu, concentration in salah. नमाज में खुशू और खुजू कैसे, वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वुजू अच्छा होना चाहिए, सही वुजू होना चाहिए. दूसरा, नमाज से 5 मिनट पहले, कितने मिनट पहले आप नमाज मुसल्ले पे जाके बैठ जाइए. आप एक सेमिनार अटेंड कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन पर और उठकर जाएंगे अल्लाह अकबर, तो आपके दिमाग में जाएगा. बीवी से लड़ाई करके आए, अल्लाह अकबर, धनिया मिला रहे हैं तो बीवी डांटेगी. गोश्त लेकर आए, बीवी बेलन चला देगी. तो नमाज का तरीका यह है कि नमाज से पहले 5 मिनट आप बैठे और अपनी सांस पर गौर करें कि मेरी सांस जो अल्लाह ताला ने दी है, ये अल्लाह को याद करती है. अल्लाह अल्लाह. एक तरीका. फर्स्ट क्या है, प्रॉपर वुजू. दूसरा है नमाज से 5 मिनट पहले मुसल्ले पे आ जाना. और तीसरा, जो आप नमाज में जिन आयतों की तिलावत करती हैं उनका मतलब जानने की कोशिश कीजिए. जब आप कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको इसका मतलब मालूम होगा तो आप गौर करेंगे. ऑल प्रेज इज फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द लॉर्ड ऑफ ऑल द क्रिएशन. अब आपको मतलब मालूम नहीं है तो आपका हाथ यहाँ पर है, दिमाग में सवार है. तीसरा, थोड़ा बहुत तसव्वुफ का लिटरेचर पढ़ेंगे. जब हाथ कान के पास गया तो आप इनका अल्लाहु अकबर, और तो मतलब नीचे रहेगा. आई गॉट अ बुक, यू कैन गूगल इट, Salah of Women in the Light of Quran and Sunnah. This book is available on PDF in internet. It is in English and Urdu. उर्दू में खवातीन की नमाज कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और इंग्लिश में द सला ऑफ वुमेन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्नह. यू कैन डाउनलोड इट फ्रीली इन पीडीएफ फॉर्म. तो आप नमाज में भी गौर कीजिए. पहले सजदे में जाइए कि अल्लाह ताला ने मुझे इसी मिट्टी से पैदा किया है. जब दूसरे सजदे में जाइए तो गौर कीजिए मुझे वापस इसी मिट्टी में आना है. जब आप हाथ को ऊपर ले, अल्लाह मैंने दुनिया को छोड़ दिया, अब मैं तेरी बारगाह में मुतवज्जो हो रही हूँ, तो इस तरह को करेंगे. जहां पर भी शैतान वसवसा डालता है, अरे मेरी नमाज में तो मुझे खुशू और खुशू हासिल नहीं होता तो मैं क्यों पढ़ूं. नो, ये शैतान का ट्रैप है. खुशू और खुशू एक दिन में नहीं आता है. इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स. सो आपका कंसंट्रेशन हो ना हो, कीप परफॉर्मिंग सलाह, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव डिजायर एंड इंटरेस्ट to have that खुशू and खुशू. सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आपने इस तरह कैसे हासिल की. इसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का है. माय फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स. उन्होंने मुझे शुरू से कहा, बेटा मुझे दौलत और वो नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम अच्छी तालीम हासिल करो. तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर और मेरे मदर का सबसे बड़ा रोल है. आज मेरे अंदर जो भी अगर कुछ अच्छाइयां हैं तो ऑल कंट्रीब्यूशन टू माय पेरेंट्स, और अगर जो भी नेगेटिव चीजें, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी. सो आई हैव डिवोटेड माय टाइम टू स्टडीज एंड इट इज नॉट दैट आई वाज अ बुक वॉर्म. मैं अपने कल एक दोस्त से, कल रात को एक बहुत बड़ा फंक्शन था शांति नगर में. आई मेट माय फ्रेंड 25 years after a long 25 years. He did MBDS, MDS करके आया. His name is यासीन शरीफ. तो उसने सबके सामने कहा उसने गैदरिंग में कि मोहम्मद, ही कॉल्स मी मोहम्मद, कि जब हम स्कूल लाइफ में थे तभी मोहम्मद जो है, he used to give me books to read on Islam and at the same time he was given the best football player. तो अल्लाह के करम से मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया. जब मैं खेल रहा हूं तो खेल रहा हूं, पढ़ रहा हूं तो पढ़ रहा हूं. कभी चिट चैटिंग, गॉसिपिंग या बैठकर फालतू की चीज नहीं. आई हैव यूटिलाइज्ड माय टाइम. सो द फर्स्ट थिंग इज द रोल ऑफ माय पेरेंट्स. सेकंड इज माय टाइम मैनेजमेंट.
सबसे बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने करम किया और मुझे कुछ करने की तौफीक दी। जज़ाकल्लाह। I respect ma'am to both of us. Our organization, Fala Research Foundation, just Google Fala Research Foundation or Dr. Sayyid Fadda Chishti Sahab was saying about language. We are having Fala office in Bangalore and RT Nagar, Rankanagar. We are teaching Arabic, Persian, Urdu, English, 4 languages on our weekly offline and online classes. Just read it and contact us. So shall I? This is the last question because madam is already there for I don't want. By following our Islamic rules and regulations, what are career options for girls? What? You can become a doctor. You can become a doctor. I would like my sister, my mother, my wife to, if she is facing a problem, to visit a Muslim female doctor. You can become a doctor. You can become a computer professional. Islam doesn't stop. Of course, Islam will not allow you to go for bodybuilding. No. No, some feminists will say, "क्यों भाई हम तो करेंगे?" But you can say you have asked Islamic opinion. आज इंडिया में कोई बोलेगा शराब पीना जायज है ना जायज है, गवर्नमेंट तो अलाउ कर रही है, लेकिन आप पूछेंगे व्हाट इज योर व्यू, मैं बोलूंगा इस्लाम में तो नाजायज है. So if you ask me Islamic opinion, Islam allows you. Sayyida Khadijatul Kubra radiyallahu anha, the first wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she was the leading businesswoman. You can become an entrepreneur. You can become a software engineer, you can become a teacher, you can become a professor, you can become a doctor. So Islam doesn't stop you. Of course, it has given a boundary. अब आप बोलेंगे कि मुझे होटल में जाकर जो है वो कैमरे भी करना है, तो भाई अमेरिका में होता है, तो भाई इस्लाम ने ऐसी चीजों को मना किया है और एक लिमिट बनाई है, और वो लिमिट मर्दों के लिए भी है. इस्लाम मर्दों को भी नहीं बोलता कि डिस्को डांस में जाकर कीजिए और जाकर बॉडी बिल्डिंग कीजिए, नहीं है, लोग करते हैं, दैट इज अलग है. तो इस्लाम हैज गिवन, मेरा एक लेक्चर आप सुन लीजिएगा, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इंशाल्लाह सम अदर टाइम विल हैव अ लेक्चर ऑन दैट. इस्लाम गिव्स यू फुल फ्रीडम, फुल राइट. और एक लास्ट बात, इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसने बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हिस्सा दिया है. नो अदर रिलीजन ऑन दिस प्लैनेट और तो आप कभी नहीं कर सकते. Good afternoon, everybody. It has been an honor to be a part of this wonderful program. On behalf of management of Hasanath Education Society, I would like to extend my heartfelt gratitude to our guest, Dr. Professor Sayyid Muhammad Fazlullah Chishti Sahab, for very eloquently highlighting the effects of social media on youth, especially on girls, which leads to health hazards and how social media influences can infringe the rights of women, and not only right of women, the right of the society, and how it creates a dual personality, and what are the steps we have to take in order to tread cautiously. I express my gratitude to Ishaq Sheikh Sahab, an honorable management member, for gracing the occasion in spite of his busy schedule. My sincere thanks to our Joint Secretary, Professor Ifat Fatima Madam, who has been an instrumental for organizing this program in order to create awareness among the students about the social media. And I also thank Mr. Salim Sahab for arranging an enlightened guest for Hasanath College. And I also extend my heartfelt gratitude to the principals of both Degree College and PO College, Dr. Muhammad Suhail Iqbal Sahab and Mrs. Jabin Fatima. And my thanks to my fellow faculty members, last but not least to the students who have been very patient and attentive listeners. Thank you one and all.